a few seconds to start. So once the recording, okay, it has started, I guess. So you can put your name in the chat box so that we can continue further. Okay, fine. So in the previous class, we have seen one example of transient response in network analysis. So this is the formula. This is the basic formula that we were discussing. That is f of t is equals to f of infinity minus f of infinity minus f of 0 into e raised to minus t by tau. So this formula is only applicable when there is either capacitor or either inductor in the circuit, right? So let us suppose if capacitor is there in the circuit. So in that case, what we do, we put v of t instead of f of t. मतलब जो function है हमारा वो क्या रहेगा, voltage रहेगा. So this formula is applicable for voltage when capacitor is in the circuit, right? And if let us suppose inductor is in circuit, then we take current into consideration, right? So this is how we solve the examples using this formula. And you might see many other formulas in other books like Made Easy or ACE Academy, but this is the what we can say, this is the universal formula. This applies for every example. Okay, so there are few short formulas in which there is f of t, f of infinity is not there. So you just have to calculate f of 0 and then you have to multiply e raised to minus t by tau. So don't do that. Okay, follow the procedure. First of all, you have to find out all the values of like currents and voltages for final state, that is t0 minus. t0 minus के लिए आपको सारे वैल्यू फाइंड आउट करने हैं. Then you have to find out the value for t0 plus, and then at last you have to find the value for uh, t is equals to infinity. Okay, so ये तीन values आप find out करेंगे and then you can use this formula. You will never make a mistake. Then what is tau here? Tau is the time constant. Let us suppose we are talking about the capacitor circuit. So tau will be RC or R equivalent into C equivalent. मतलब जितने resistances है, total equivalent resistance in the circuit multiplied with the total capacitance in the circuit. So we have seen one example in which there was I think one capacitor. So there might be cases you may get two or three capacitors and you have to find out voltage across one of them. मतलब उन तीनों में से किसी एक के across आप voltage निकालना है. So in that case you will take C equivalent. Okay, मतलब एडिशन अगर वो सीरीज में है तो how you deal with it. अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में है, so how you deal with you know that, right? So this is the thing. Then we had seen one example, and we have completed half of the example, right? So we are going to complete the half example, and then we can proceed further and see next topics. So this was the example, and here we had to calculate Vc of t at t is equals to 0.5 seconds and t is equals to 2 seconds, and the switch is closing at t is equals to 1 second. So this was the example, and I think we have found out t is equals to 0.5 second पे हमने vc of t निकाला है. Any doubt till this कि मतलब 0.5 t is equals to 0.5 पे हमने vc of t जो निकाला था, यहाँ तक कोई डाउट? Any responses in the chat box or by turning on your mic? Okay, no problem, right? Okay, so this circuit Aditya might not understand because I think he was absent in the previous lecture. Okay, so here we have one capacitor, that is 2 farad capacitor. There are two voltage sources, 6 and 2 u of minus t, and the second one is 18 volt. Okay, so these two voltage sources are there. One capacitance is there. So we are going to use that formula for voltage, right? F of t is equals to f of infinity minus in bracket f of infinity minus f of 0 into a raised to minus t by tau.
So by heart that formula. You, if you get any such kind of problem, you can use that formula. Okay, so that's what. Then if you observe here, the switch is closing at t is equals to 1 second. बराबर, मतलब जब हम vc of t की वैल्यू निकाल रहे हैं t is equals to 0.5 पे, so we are considering, or we are not considering, actually it is there कि switch अभी तक close हुआ ही नहीं है. Okay, switch is not closing. So how do we proceed with the calculations? First of all, we found out the value of vc of t at t is equals to 0 minus. हम मतलब जो हमारा व्हाट वी कैन से रेगुलर प्रोसेस है वही करेंगे. t इज इक्वल्स टू 0 माइनस पे हमने वैल्यू फाइंड आउट की, वही वैल्यू t इज इक्वल्स टू 0 प्लस पे भी रहेगी. राइट और रॉन्ग? एंड देन वी फाइंड आउट द वैल्यू एट t इज इक्वल्स टू 1. सो t इज इक्वल्स टू 1 पे हमने क्यों फाइंड आउट की वैल्यू? बिकॉज फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, मतलब 0 टू 1 के लिए t इज इक्वल्स टू 1 ही t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी है. So we had this formula, just give me a second. We had this formula. Vc of t, sorry, okay, yeah. Vc of t is equals to 9 plus 3 into e raised to minus t by 6. Okay, so यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखोगे, किस चीज की वैल्यू रखनी है? t is equals to 0.5 की वैल्यू रखोगे, so you will get the answer. That's it. यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया था. अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमें फाइंड आउट करना है t is equals to 2 seconds पे. So for that, give me a few seconds. I'll be taking new pages. Just a second. Okay, I hope the other slide is visible to you. So I need to draw that circuit again. So just give me a few seconds so that I can draw it again. Where is that circuit? Here it is. So 6 ohm resistance is there. Then we have another 6 ohm resistance. Here we have one voltage source, that is voltage is 6 into u of minus t. Minus t this is, okay. 2 of minus t. Then lastly we have a voltage source V, which is 18 volts. This is 6 ohm, 6 ohm. We had one switch here, and I think a resistance is also here. Then we had a capacitor here, which is 2 farad, and this switch is closing at t is equals to 1 second. This is 6 ohm. And now what we are going to do, we are going to find out Vc of t, Vc of t at t is equals to 2 seconds. So here this formula is not applicable. This formula is not applicable. This formula is applicable only for t is equals to, or t when the value of t is between 0 and 1. Only then this formula is applicable. So we need to find out a different formula, other formula for to calculate the value of Vc of t at t is equals to 2 second. So यहाँ पे जब हम 2 seconds की बात कर रहे हैं, then this switch will be closed, isn't it? This switch will be closed, and if this switch is closed, and in that condition also, see, if you can see, this capacitor is having voltage sources connected to it, like this source is also connected to it, and this source is also connected to it. But since this is u of minus t, students, this is u of minus t, that means this source will not be in working condition when we talk about t is equals to 2 or t is equals to 1. Why? Because it is only active when the time is negative, right? मतलब हमने देखा था ना. So this voltage source will fade out, and this will act as nothing but short circuit.
So let me just draw the new circuit. How will it look like? Okay, so this resistance will be here as it is. This resistance will be here, and this voltage source will not be there. Then this voltage source is going nowhere. This is here only. This is 18 volt, and now the switch is closed. The switch is closed, and a resistance is also here, 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm, and then lastly here we have plus and minus VC, right? हमें यहाँ पे voltage की value निकालनी है. So now from the previous formula we had that formula ना. So इस formula में use your calculators and find out VC of t at 1 or t is equals to 1. अभी t is equals to 0.5 पे तो तुमने निकाल लिया है आई थिंक. t is equals to 0.5 पे तो तुमने निकाल लिया है. अभी t is equals to 1 पे निकाल लो. यहाँ पे t is equals to 1 रखो इस फॉर्मूला में, एंड प्लीज टेल मी द वैल्यू. व्हाट इज योर वैल्यू? कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू? प्लीज यूज योर कैलकुलेटर्स. Okay, 10.2 is it for everyone? Shardul, please cross check. Aditya, you also. Please put the value of t is equals to 0.5 in that formula. And what is the value? Okay, it is 11.53. Okay, it is 11.53, right? So yeah, I also got similar values. Like I had value 11.258, something like that. So don't go with the like, मतलब यहाँ पे value क्या आ रही है उस पे ज़्यादा हमें focus नहीं करना. We have to focus on the process. Now t is equals to 1 पे value आ रही है 11.53. For a moment we consider this is the value that we are getting, 11.53. So the switch has just closed now. t is equals to 1 पे क्या हुआ है? Switch just close हुआ है. तो यहाँ पे एक्चुअली हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं दैट इज VC ऑफ t एट t इज इक्वल्स टू 1 माइनस. जब हम निकालते थे ना 0 माइनस पे हमने वैल्यू निकाली, उसके बाद में 0 प्लस पे वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में t इज इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू निकालेंगे. इस तरीके से हम करते थे, बराबर. तो इन दैट केस हमारा जो स्विच है वो 0 पे क्लोज होता था, लेकिन हम अभी हमारा यहाँ पे स्विच t इज इक्वल्स टू 1 पे क्लोज हुआ है. सो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो अभी 1 पे आया है. सो दिस वैल्यू दैट इज 11.3 जो 11.53 जो वैल्यू तुमने निकाली है, दैट विल बी VC ऑफ t एट t इज इक्वल्स टू, लेट मी जस्ट राइट, ओके, लेट मी जस्ट राइट VC of t is equals to, or VC of 1 minus is equals to VC of 1 plus is equals to 11.53. This is what. I hope this is clear to you. 11.53 will be the value. Now, what value we need to calculate? What value we need to calculate? We need to calculate the value of VC of t at infinity. तो अभी इन्फिनिटी पे कैलकुलेट करना शुरू कर दो. यही सेम ये रहेगा ना, सेम सर्किट रहेगा VC ऑफ t इन्फिनिटी के लिए, क्योंकि ये जो वोल्टेज सोर्स है 18 वोल्ट का वो कनेक्टेड ही है VC के साथ में. सो इट विल नेवर बी शॉर्ट सर्किट, it will never consume the current, it will be always fully charged and it will be open all the time. ठीक है, तो VC ऑफ t की वैल्यू निकालो. VC ऑफ इन्फिनिटी की मतलब अभी VC की वैल्यू इन्फिनिटी पे क्या आएगी? So can you proceed? Do you have any idea how you're gonna go? VC at infinity. Voltage across capacitor at infinity. Okay, I'll give you one idea. Okay, if you have, you can try. Otherwise, let us suppose current X is flowing here. Current X is flowing here.
So current through this branch should be also X, because this is 6 ohm, this is 6 ohm, isn't it? So X current should be there, like in both the branches. So the current coming is from here, so it should be 2x. 2x current is coming from here, X is going here, X is going here. Okay. So if you see, these two resistances are in parallel. Okay, so let us suppose 6 ohm resistances are in parallel. So their equivalent will be, we don't need to calculate. It would be how much? If two 6 ohm resistances are in parallel, then their equivalent resistance is half of one of the resistance, that is 3 ohm, right? So now this 3 ohm resistance is in parallel with what? This 3 ohm resistance is in series with this 6 ohm resistance. See, अभी इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो 3 ओहम आया, which is in series with this 6 ohm. Okay, this is open circuit, don't think about it. This is open circuit. अभी ये दो रेजिस्टेंसेस इसके सीरीज में है, so 6 plus 3 is 9. Now 9 ohm resistance is connected in series with 18 volt voltage source. So what should be the current flowing through the circuit? What should be the current? Obviously it should be 2 ampere, isn't it? 2 ampere. Now 2 ampere is what? 2 ampere is 2x. 2 ampere is 2x. So x will be equal to 1 ampere, obviously. And if 1 ampere is equal to x, and if 1 ampere current is flowing through this, so what shall be the voltage across this resistance, 6 ohm resistance? It should be 6 volt, isn't it? The voltage across this resistance should be 6 volt, and that should be same across this capacitance, isn't it? Do you get this point? I hope you're getting it right. See, this is 6 volt, so it should be 6 volt. So VC of infinity will be 6 volt. VC at infinity will be 6 volt. Any doubt till this? No doubts? कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो, अगर नहीं है तो चैट बॉक्स में लिखो either no, or you can tell me by turning on your mic. शार्दुल, शुभम, आदित्य, are you guys even listening to me? Like I'm not sure whether I'm connected or not if you're not responding. Okay, no doubt. Okay, fine, thank you. Okay, chalo, ठीक. So now we've got the value of VC of infinity. Now what was the formula? Formula is VC of t is equals to V of, sorry, it should not be direct, V of VC of infinity minus under bracket VC of infinity minus VC of 0 into e raised to minus t by tau. अभी tau भी तो हमें निकालना है, tau भी तो पेंडिंग है. So now you must be having a doubt, sir, where should we calculate tau? मतलब t is equals to 0 प्लस पे कैलकुलेट करना है, t is equals to 0 माइनस पे, t is equals to 1 पे, या फिर t is equals to किस चीज पे हमें कैलकुलेट करना है? So always remember, tau should be always calculated on the final stage. I won't say v is equals to infinity. v is equals to infinity बने फाइनल स्टेज पे. अगर आपको कहीं पे मतलब पूछा गया है कि वोल्टेज निकालो, आप v is equals to 5 पे, okay, v is equals to 5 seconds पे, sorry, t is equals to 5 seconds पे वोल्टेज निकालो. So in that case you will not be calculating tau for v is equals to infinity. You will be calculating tau for v is equals to t is equals to 5 seconds. ठीक है. तो यहाँ पे फाइनल स्टेज क्या है हमारी, फाइनल व्हाट वी कैन से, फाइनल टाइम फ्रेम क्या है? फाइनल टाइम फ्रेम इज t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. सो यहाँ पे t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे ही हमें व्हाट वी कैन से इक्विवेलेंट, सॉरी, टाइम कांस्टेंट निकालना है. सो हाउ डू वी डू दैट? टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल्स टू r इक्विवेलेंट, टाउ इज इक्वल्स टू r इक्विवेलेंट इनटू C इक्विवेलेंट. अभी C इक्विवेलेंट की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही C है यहाँ पे. R इक्विवेलेंट निकालना है तो R इक्विवेलेंट इसी सर्किट में हम निकालेंगे. हाउ डू वी डू दैट? सो व्हेन वी फाइंड आउट the what we can say equivalent resistance in a circuit, so in that case we replace all the independent voltage sources by their
internal resistances, voltage sources as well as current sources. We have seen that in the theorems, like that Thevenin theorem, Norton's theorem. तो हमने एक मतलब प्रोसीजर ही था ना उसका, तो किस तरीके से RTH निकालना है या फिर RN निकालना है, सो उसी तरीके से आपको यहाँ पे निकालना है. Okay, you just have to open the terminal, that is कैपेसिटर निकाल लेना है, उस टर्मिनल के अक्रॉस R equivalent निकालना है. So what shall be the R equivalent across these terminals? What shall be the R equivalent? Now जो 18 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है ना, उसे शॉर्ट कर दो. वी डोंट नीड दैट एनी मोर. ओके, 18 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है उसे शॉर्ट कर दो एंड जस्ट फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस the open terminals. No, Shardul, 9 should not be there. See, okay, wait. See, these two resistances, like see, 6 ohm resistances are in parallel, so its equivalent will be 3 ohm, that's clear. But when this 3 ohm resistance is there, this 3 ohm resistance is again in parallel with 6 ohm resistance. It's not in serial. So 6 plus 3 is 9 and 6 into 3 is 18. So 18 divided by 9, it should be what? It should be 2 ohm, 2 ohm equivalent resistance. Do you agree with me, Aditya, Shardul? 2 ohm resistance should be the equivalent resistance. If you had, okay, wait, I'll just solve it. See, लेफ्ट साइड में दो 6 ओम के रेजिस्टेंसेस थे जो कि एक इक्विवेलेंट बन के 3 ओम हो गए, एंड यहाँ पे एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है जो हमारा वोल्टेज सोर्स है, वो तो शॉर्ट हो गया, एंड यहाँ पे वो कैपेसिटर के टर्मिनल्स थे. ओके, सो if you see this and this are in parallel, so 6 into 3 divided by 6 plus 3, that is 18 by 2 is, sorry, 18 by 9 it should be, 18 by 9. So R equivalent is 2 ohm. I hope this is clear. Okay, fine. And then C is what? C की value हमें दी है 2 farad, right? So tau will be equal to 2 into 2, that is 4. So tau मिल गया अभी हमें. Now what is remaining? तो इस फॉर्मूला में अभी कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो कि हमें पता नहीं है. VC ऑफ इन्फिनिटी इज 6 वोल्ट पता है, VC ऑफ इन्फिनिटी इज 6 वोल्ट पता है, VC ऑफ जीरो ये नहीं पता है. ओके, एंड ई रेस टू माइनस टी, टी की तो वैल्यू हम नहीं रखेंगे क्योंकि हम टाइम डोमेन में इसकी व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट ट्रांजिएंट, सो दैट्स व्हाई टी इज नेसेसरी. मतलब टी की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी. टाउ भी हमें पता है, टाउ इज 4. सो VC ऑफ जीरो, तो VC ऑफ जीरो की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एनी आइडिया? What can we write in place of VC of minus t? Guys, please understand one thing, that if you understand this example 100%, you don't need to practice these examples seriously, because this one example contains all the aspects, that all the possibilities, because the switch is closing at t is equals to 1 and they are asking to find out voltage before closing the switch and after closing the switch. But that means all three aspects are covered here. So VC of 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? Can anybody tell? See, this VC of 0 is in formula, but if we go conceptually, then VC of 0 is nothing but the initial voltage. So what is initial voltage? यहाँ पे switch close होने के बाद का initial voltage. So यहाँ पे VC of 0 की जगह पे हमें VC of 1 लिखना पड़ेगा, because that's the initial voltage ना. Switch हमारा VC of 1 पे बंद हो रहा है, सॉरी T is equals to 1 पे बंद हो रहा है, राइट? सो हमने कुछ कैलकुलेट किया था, आई गेस VC of 1, what was that? 11.53 was it, right? 11.53 हमने कैलकुलेट किया था ना. So proceed with that. That's the value we need. Okay, so I will write the formula again. VC of t is equals to VC of infinity minus VC of infinity minus
Vc of infinity अगेन माइनस Vc of 0 की जगह पे मैं यहाँ पे Vc of 1 लिखूंगा e raised to minus t by tau. So Vc of infinity है 6 volt, Vc of infinity again 6 volt, Vc of 1 is 11.53 and e raised to minus t by 4. Okay, so after that 6 minus 11.53, so it should be I think 6 minus of 5.53 and e raised to minus t by 4, right? Sorry, minus t by 4. So minus of minus 5 is 6. So 6 plus 5 into e raised to minus t by 4. So this is the formula. Now this formula is applicable for what? This formula is applicable for what region? Can anybody tell? जो पहला वाला फॉर्मूला था वो था एप्लीकेबल 0 to 1 के लिए, t is equals to the value of t between 0 and 1. Now this formula is applicable for all the values which are greater than 1. Do you agree with me? All the values which are greater than 1. Any doubt till this? I don't see any responses from your side in the chat box, so that's why I'm a bit confused whether you understand this or not. Okay, you understood this. Shubham, any doubt? Aditya? No. Okay, no doubt. Clear. So अभी कैलकुलेट करो फिर वैल्यू t is equals to 2 पे वैल्यू कैलकुलेट करो. Put the value of t is equals to 2 and all the values you have 6 plus 5 into e raised to minus 2 by 4 or e raised to minus 1 by 2. e raised to minus 1 by 2 की वैल्यू कैलकुलेट करो, उसे 5 से मल्टीप्लाई करना है and you have to add that value to 6. 15.12. Okay, so guys, one more thing here. Sorry for that was my bad. Okay, one more thing here. In the formula we have changed here. See, यहाँ पे 0 था तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, बराबर ना? मतलब हमारा जो स्विच का क्लोजिंग पॉइंट था वो t is equals to 1 है, t is equals to 0 नहीं है. Did you get this point? So यहाँ पे भी आपको सिर्फ t नहीं लिखना है. My bad, I should have told you earlier. यहाँ पे आपको सिर्फ t नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माइनस t माइनस 1 बाय टाउ. माइनस t बाय टाउ की जगह पे आप क्या लिखोगे? माइनस t माइनस 1 बाय टाउ, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो t इज इक्वल्स टू 1 पे स्विच हो गया है. ओके, सो जो फाइनल फॉर्मूला है वो भी चेंज होगा. ये जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे, this formula should not be like this. This formula should be just a little change is there कि 6 plus 5 into e raised to the power minus t by 1 by 4. So that's it. That was the small correction. Sorry, Shardul, you calculated the value for that formula and that was wrong one. My bad. Now calculate for this. So 2 minus 1 will be 1 and it should be minus 1 by 4. Okay, e raised to minus 1 by 4 की वैल्यू निकालो, 5 से मल्टीप्लाई करो. It is again 5.53. Okay, so yeah, यहाँ पे सिर्फ 5 नहीं है, 5.53 है. Here मैं कभी कभी ये चीजें भूल जाता हूँ, ठीक है? ये 5.53 है ना, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा है, so which is not correct. यहाँ पे 5.53 होना चाहिए. Please make corrections and please suggest me that if I make any mistake. 10.30. Okay, I hope everybody has got that value. Okay, so that's it. That's it. Now you can calculate for anything. 9.89. So little similar. Okay. So one more thing, students, guys, I want to ask you, like you are going to appear in the GATE examination of 2022, right? So do you all know how to use that online calculator? If not, I can take a class of that. Like, okay, so you will not be using your regular calculator in GATE examination hall.
You will be using that calculator which is provided on the website itself. Okay, so it needs some practice. When you what do we when you are about to, like, 3-4 months are remaining for examination, you can start practicing it. It needs practice. Okay, all right, so that's not our topic. So that's it for it. Then now next thing is, so this formula was strictly applicable for either inductor or capacitor should be there in the circuit. That's it. Okay, now let us suppose one inductor is there and one capacitor is there. So in that case you cannot use this formula. In that case you cannot use this formula. You have to use Laplace. Now, do you know what is the main use of using Laplace in the network analysis? Do you have any idea कि हम Laplace जब जब यूज करते हैं, so उसका मेन एडवांटेज क्या है? मतलब I hope you understand my question. Yeah, we are going to use Laplace and all those things. That is fine. वो मैं बताऊंगा भी. लेकिन why do you use that? So the main advantage of using Laplace in the networks is that जहां पे भी कैपेसिटर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर इंडक्टर अगर आपके सर्किट में है, सो यूज लैप्लास सो दैट इट विल कन्वर्ट कैपेसिटर एंड इंडक्टर इनटू इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टिव फॉर्म. मतलब when you deal in Laplace transform, then those two elements will be acting as a resistance. तो कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे. तो क्या हो गए? कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे. So that's the advantage of using Laplace. Okay, so before we go to the next point, let me just give you some formulas which might be helpful for you to solve further examples. So जब भी write down one note. Okay, I'll write it with you. Sorry for my bad handwriting. So please write down this note and this, remember this. If inductor and capacitor are simultaneously in circuit, so such type of questions to be solved by using Laplace transform only. Laplace transform यूज करना ही है. Okay, that's the thing. Laplace transform आपको यूज करना ही पड़ेगा जब कैपेसिटर और इंडक्टर साइमल्टेनियसली सर्किट में हो. Okay, so what Laplace transform you are going to use? You may know that, like, Laplace transform is of single-sided. Laplace transform is also there. Double-sided Laplace transform is also there. So we are going to use single-sided Laplace transform. That is this one, the right-sided Laplace transform. F of s is equals to, the time frame is 0 to infinity. 0 to infinity, f of t into, sorry, f of t into e raised to minus st into dt. So this is the formula that we are going to use. Not the double-sided one. I think you have double-sided Laplace transform in signal and system, I guess. Okay. So in mathematics and in networks, you have to use this one. Okay. So few Laplace transforms I would like to tell you are, so this is f of t, let us suppose, and this is f of s. Delta of t का Laplace transform होता है 1. Then u of t का Laplace transform होता है 1 by s. e raised to at का Laplace transform होता है 1 upon s plus a. Then t का Laplace transform होता है 1 upon s square. Okay, and then there are few more. t into e raised to at का Laplace transform होता है 1 upon s plus a into n plus 1. Okay, sorry, it should not be 1.
n plus 1. Yeah, it should be 1 plus n itself, right? And t raised to n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है n factorial divided by s raised to n plus 1. So these are few things that might help you. ओके बाकी भी है, मतलब साइन ओमेगा टी का भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है, आपको पता होगा ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, देन कॉस ओमेगा टी का होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. सो दीज लैप्लास ट्रांसफॉर्म, बट आई डोंट थिंक यू विल नीड मोर देन दिस. साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टू से ओमेगा टी से आगे आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके सो okay, let's proceed with one example. How we deal the examples which have capacitors and inductors simultaneously. So let me just draw one circuit. 2 ohm resistance is there. Then this is inductor. I hope you can distinguish between them. Then we have a 2 volt voltage source here. Then we have a current source here. A capacitance is here, 0.5 farad. Switch is here. And lastly, we have one resistance, that is 2 ohm, 2 ohm, 2 Henry, 4 ohm it is. This current source is supplying 2 ampere current, and this voltage source is of 2 volt. Now here, if you can see, inductor is there, capacitor is there. Okay. So first of all, what we have to do, we have to calculate current in the inductor and voltage across the capacitor in our यूजुअल मैनर और यूजुअल फैशन. तो यहां पर अगर आप देखोगे तो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों कनेक्टेड हैं इंडक्टर और कैपेसिटर से. सो इन दैट केस और इन दिस केस, अभी देखो ये जो वोल्टेज सोर्स है वो कनेक्टेड है इस 2 हेनरी वाले इंडक्टर के साथ में. मतलब ये जो इंडक्टर है ये करंट एब्जॉर्ब कर चुका है, मैग्नेटिक फ्लक्स उसके फुल्ली कैपेसिटी को उसने वो रीच कर चुका है, एंड नाउ इट इज अलाउिंग द करंट टू फ्लो थ्रू इट, बट दैट मींस इट इज एक्टिंग एज अ शॉर्ट सर्किट. ओके, शॉर्ट सर्किट एज अ एक्ट हो रहा है. जस्ट वन मोर थिंग, दिस स्विच इज क्लोजिंग, बट व्हेन दिस स्विच इज क्लोजिंग एट t is equals to 0, t is equals to 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है. सॉरी, ओके, सो दिस इज t is equals to 0 पे ये स्विच क्लोज हो रहा है. Okay, so what I was talking about, yeah, I was talking about inductor. So inductor connected है voltage source के साथ में, इसका मतलब वो short circuit है, and when it is short circuit, so that means some current is supplied to the capacitor also, and capacitor को अगर current supply हो रहा है for an infinite duration of time, then in that case the capacitor will get fully charged and it will act as a open circuit or open, its terminals will be open. So यहाँ पे आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है t इज इक्वल्स टू 0 माइनस पे, t इज इक्वल्स टू 0 माइनस पे IL निकालना है, VC निकालना है. कैन यू डू दैट? इट्स वेरी इजी आई गेस, प्लीज गिव इट अ ट्राई. सो यहाँ पे देखो, इसे शॉर्ट सर्किट कर दो, इसे ओपन सर्किट कर दो. आई रीड्रॉ द सर्किट. ओके, I'll redraw the circuit. So circuit will be same. Second, circuit will be same, but the changes will be here. 2 ohm resistance is as it is. This inductor is short circuited. This 4 ohm resistance is as it is, and this voltage source will be here itself. It is not going to go anywhere. Then the current source is here. Okay, so its value is 2 ampere, its value is 2 volt.
2 ohm, then we have 4 ohm. Now see, since we are drawing the circuit for t is equals to 0 minus, तो 0 minus पे ये जो स्विच है, ये स्विच ओपन ही है, तो मैं ये वाला रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करूंगा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है ड्रॉ करने की, बिकॉज इट इज नॉट गोना अफेक्ट एट ऑल, राइट? सो यहाँ पे मैं सिर्फ कैपेसिटर जो है वो यहाँ पे लगा दूंगा, और जो कि ओपन सर्किट ही है। तो यहाँ पे मुझे VC निकालना है, यहाँ पे मुझे IL निकालना है, करंट थ्रू कंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. So can you find the current? What it should be? It's very easy. No logic in it at all. IL की वैल्यू क्या है, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है. कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है. No idea? Can you see on the right side there is a current source which is directly connected to the 4 ohm resistance and 2 ohm resistance, as well as that I. So its value should be 2 ampere. No logic, no boss logic here. कुछ भी नहीं है. So IL0 minus is equals to IL0 plus is equals to 2 amps. Now VC 0 minus is equals to VC 0 plus is equals to क्या आएगा? अभी देखो 2 ओहम का, सॉरी 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 4 ओहम रेजिस्टेंस से एज वेल एज 2 ohm resistance से. So what shall be the voltage across that 2 ohm resistance which is on the left side? It should be obviously 4 volt, and that 4 volt is again in series with that 2 volt voltage source. So इस कैपेसिटर के अक्रॉस का 4 वोल्ट एंड ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट. ओके, 2 एम्पियर करंट जब यहां से जाएगी, सो यहाँ पे 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा. नाउ दिस इज positive negative, that means they are in series and they are going to add. So voltage across these terminals will be what? देखो ना, यहाँ पे अगर वो कुछ वोल्टेज है, so it should be 6 volt. Okay, it is 6 volt. Do you agree with me? 6 volt. किसी को कोई डाउट यहाँ पे अगर कुछ अलग हो सकता है तो? Now some of you might say कि सर राइट साइड में एक 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, उसी के सीरीज में एक रेजिस्टेंस है 4 ओहम का, and that 2 ampere current is flowing through that 4 ohm resistance, and it shows minus 8 volt as the voltage across this VC. But is that minus 8 volt really? No, it isn't, because we cannot determine the voltage across a current source. That's the thing. So that's why we are taking the help of left side circuit. Okay, that's why we are not taking the help of right side circuit. वहां पे current source है ना. Yeah, we can calculate the voltage across current source, but these are special cases. Okay, so 6 volt यहाँ पे आ गया. Now how do we use this 6 volt? तो हमने तो एक बोल दिया कि जब भी सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों हो तो हमें लैप्लास का यूज करना है, लेकिन अभी तक हमने लैप्लास का यूज किया ही नहीं है. ओके, सो एट दिस स्टेज अभी 0 क्रॉस होने के बाद में आपको लैप्लास का यूज करना है. ओके, सो when you convert the circuit into Laplace domain, तो प्लीज टेल मी, अगर 2 हेनरी का इंडक्टर है, सो व्हाट यू विल राइट फॉर दैट? इंडक्टर को हम कैसे रिप्लेस करते हैं? इंडक्टर इज रिप्लेस्ड इन Laplace by SL, isn't it? And capacitor is replaced by S1 by SC. I hope you remember this. Inductor is replaced by SL and capacitance is replaced by 1 by SC Laplace domain में. Okay, so चलो मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूं जिसमें कि आपको रिप्लेस करके दिखाता हूं. So see, this is 2 ohm resistance, that will be as it is. Now this inductance is here
Again, this 4 ohm resistance is here. Then we have a current source. I'm not giving value as of now for anything. Okay, so see, now this switch has closed. Okay, अभी जीरो का टाइम फ्रेम जो है वो पास हो चुका है and this switch is closed. So ये जो 2 हेनरी का इंडक्टर था इसे हम लिखेंगे 2s. L की वैल्यू है 2, S की वैल्यू S ही रहेगी. बाकी वैल्यूज जो है, दिस इज 2 ओहम, दिस इज 4 ओहम. अभी ये जो वोल्टेज सोर्स था हमारा, सॉरी करंट सोर्स था, ये करंट सोर्स था हमारा 2 एम्पियर. सो इसे हम लिखेंगे 2 बाई एस. कांस्टेंट का लैप्लास क्या होता है? कांस्टेंट का लैप्लास होता है 1 बाई एस, isn't it? हमने देखा ना, u ऑफ t का लैप्लास होता है 1 बाई एस. u ऑफ t इज व्हाट? u ऑफ t इज नथिंग बट 1. 1 का लैप्लास 1 बाई एस है, तो 2 का लैप्लास 2 बाई एस होगा, 3 का लैप्लास 3 बाई एस होगा. सो 2 बाई एस का करंट सोर्स यहाँ पे हमने लिख दिया. Then this voltage source will be again 2 by S. अभी अगर आपको कहीं पे इन केस साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का वोल्टेज सोर्स आ गया, करंट सोर्स आ गया, सो यू कैन सिंपली टेक द लैप्लास ऑफ इट. ओके, नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पे कैपेसिटेंस अभी हमारा बाकी है. कैपेसिटेंस एक बीच में था ना. सो what was the voltage across capacitor as t is equals to 0 plus? It was 6 volt. 6 का लैप्लास क्या होगा? What should be the Laplace of 6? Obviously 6 by s. So 6 by s का एक वोल्टेज सोर्स, 6 बाय एस का एक वोल्टेज सोर्स हमें कैपेसिटर के साथ में लगाना है. ओके, 6 बाय एस का वोल्टेज सोर्स कैपेसिटर के साथ में लगाना है. एंड व्हाट अबाउट करंट सोर्स? करंट सोर्स में आई एल की वैल्यू थी 2 एम्पियर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 एम्पियर वैल्यू थी. तो 2 एम्पियर का करंट सोर्स हमें करंट इंडक्टर के पैरेलल में लगाना है. इंडक्टर के पैरेलल में, कैपेसिटर के सीरीज में, कैपेसिटर के सीरीज में वोल्टेज सोर्स, इंडक्टर के पैरेलल में करंट सोर्स. ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट. सो देखो, यहां पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगाया और हमारा जो कैपेसिटर था वो एज इट इज ही है. यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू क्या थी? इट वाज 0.5 फैरड. ओके, सो 0.5 फैरड का अगर आप ऐसे लिखोगे, 1 बाय एस सी हम लिखते हैं ना, तो 1 बाय एस तो एज इट इज रहा, सी इज 0.5. सो 1 बाई 0.5 इज 2 हो जाएगा, यानी कि 2 बाय एस हो जाएगा. तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? 2 बाय एस. और ये जो वोल्टेज सोर्स है ये रहेगा 6 बाय एस. अगर मान लो कि जो हमारा वोल्टेज निकला है वो वोल्टेज जीरो है, अभी यहाँ पे 6 निकला था, वीसी ऑफ 0 प्लस के लिए 6 निकला था, लेकिन मान लीजिए कि जीरो है. सो इन दैट केस डू यू नीड टू ऐड एनी वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ कैपेसिटर? मान लो ये वैल्यू जीरो है, डू यू नीड टू ऐड एनीथिंग? नो, यू डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग. ओके, इट शुड बी नथिंग, 0 वोल्ट, 0 बाय एस, इट शुड बी 0. ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. नाउ व्हाट अबाउट करंट सोर्स? करंट सोर्स में अभी हमारे करंट की डायरेक्शन क्या थी? करंट की डायरेक्शन थी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो हमें एक करंट सोर्स लगाना है पैरेलल में इसके. उसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2 बाय एस. दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 बाय एस. नाउ व्हाट वी डू, अभी करना क्या है? अभी see, this 6 by s is a voltage source and this 2 by s is a what we can say is nothing but a capacitor. It is not a voltage. So these two are different things. 2s जो है वो इंडक्टर की वैल्यू है लैप्लास में, और 2 by s जो है वो ऊपर का जो उसके पैरेलल में है वो करंट की वैल्यू. दे आर नॉट सेम. सो यहाँ पे 6 by s प्लस 2 by s नहीं होगा. 6 by s प्लस 2 by s नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि वोल्टेज को और रेजिस्टेंस को हम ऐड नहीं करते हैं. वी ऐड वोल्टेजेस विद वोल्टेज, करंट्स विद करंट. वी डोंट ऐड करंट्स विद वोल्टेज, सॉरी या करंट्स विद वोल्टेज एंड करंट्स विद रेजिस्टेंसेस. सो डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे 2 by s जो है वो इट इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस. अगेन दैट इंडक्टर 2s that is again acting as a resistance, but this 2 by s and 6 by s, these are voltage and current sources respectively, so they will not be added. Okay, so how do we proceed with this? Now let us suppose the current through inductor IL is this IL.
Okay, so IL is coming from here, but IL is coming from here, that means here it was 2 by S, 2 by S करंट यहाँ पे थी, यहाँ पे से IL यहाँ पे चली गई, सो IL अगर यहाँ पे चली जाती है तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 by S माइनस IL। इतनी करंट इस नीचे की ब्रांच में आ गई। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ 2 by S माइनस IL जो है वो मल्टीप्लाई होगी 2 by S से, क्योंकि इट इज एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस। जो नीचे का जो कैपेसिटर है ना वो एज एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस है। सो रेजिस्टेंस के साथ में अगर करंट मल्टीप्लाई होती है तो इट विल कन्वर्ट इट टू वोल्टेज, एंड देन यू कैन ऐड दिस 6 by S एंड दैट वोल्टेज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस व्हाट एवर आई एम ट्राइंग टू टॉक। समझ रहे हो ना? True, tell me honestly. Tell me honestly. If you are getting confused, we can discuss this in the next class also. But it is very, very important for you to understand. You're understanding? Difference between voltage source and the current and the resistances. यहाँ पे 2 by S as a resistance क्यों act कर रहा है? 6 by S हमने क्यों add किया? Guys, please responses. I'm talking from last 30, not 30 minutes, near about 50 minutes. So at least you should speak a word, or you should at least type something in the chat box. Honestly, you are understanding this or not? Okay, tell me. अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो बता दो यार, मतलब ऐसे चुप रहोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा? क्या कैलकुलेट करना यही पता नहीं है सो तो कि क्या होगा? Okay, nobody's responding, that means maybe you're not understanding. Okay, but can't help it. Please go through the video again, or we can discuss this in the next class also. Okay, so यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट हमें करना है दो चीजें। IL की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये IL की जो वैल्यू है वो लैप्लास डोमेन में आएगी। अभी सारे के सारे लैप्लास में है तो लैप्लास डोमेन में IL की वैल्यू आएगी। उसे अगर आप लैप्लास डोमेन से टाइम डोमेन में कर दोगे, सो दैट विल बी IL ऑफ t विच इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे जीरो इन्फिनिटी कुछ नहीं लिखना है। वॉट एवर वी आर कैलकुलेटिंग फॉर इन्फिनिटी ओनली। ओके, तो यहाँ पे जो हमने पहले किया था ना, t इज इक्वल्स टू जीरो माइनस पे कैलकुलेट करो, बाद में t इज इक्वल्स टू जीरो प्लस पे, उसके बाद में t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, वी डोंट डू दैट हियर। सिर्फ t इज इक्वल्स टू जीरो माइनस पे कैलकुलेट किया, प्लस पे कैलकुलेट किया, एंड द लास्ट वन दैट वी हैव दिस वन। ओके, सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, हमें इस IL की वैल्यू निकालनी है, एंड दिस टोटल वैल्यू विल बी ऑफ VC। दिस इज VC, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ओके, सो इस टर्मिनल में जो कुछ भी वोल्टेज आएगा वो आएगा लैप्लास डोमेन में, एंड यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू अ टाइम डोमेन। टाइम डोमेन में निकाल दोगे तो हो जाएगा। सो आई गेस स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल अबाउट transient from my side. Okay, I don't see anything, like there are certain number of examples that you need to solve, but I can't see any concepts that I have left. I don't know whether resonance part is there in your syllabus or not. If resonance is there, then we can go through it. And one more thing, I think we haven't dealt with maximum power transfer theorem, did we? नहीं ना, हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं लिया है ना। सो इट इज इंपॉर्टेंट। सो मैक्स टू मैक्स वी आर गोइंग टू टेक वन मोर लेक्चर ऑन नेटवर्क एनालिसिस। ओके, नहीं लिया है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, नहीं लिया है। ओके, विल डू दैट। ठीक, सो मैक्स टू मैक्स वन मोर लेक्चर ऑन नेटवर्क एनालिसिस, एंड आई माइट नीड 3 more lectures for control system. After that we are going to change the subjects. Okay, so I hope I added some value to your study today. Okay, so that's it for today, guys. You can leave the class. Thank you, bye bye, and good night. Bye bye, students. Bye bye. Yeah, welcome, no problem. My pleasure. Bye.